the real life superhero becomes the real life superhero. यानी कि यंग सेक्सी एक्ट्रेसेस अपने से डबल उम्र के हीरो के साथ स्क्रीन पर रोमांस करते करते हो जाती हैं इम्प्रेस इवन इन रियल लाइफ। अब सोनाक्षी को ही ले लो। She follows Salman, who's 22 years older than her, like a little puppy everywhere he goes. जहाँ हो सलमान वही होती है सोनाक्षी। नहीं तो सलमान की इनकम्प्लीट होती है हर पार्टी। सिर्फ यही नहीं, she even apes him in everything she does. अगर सलमान loves charity, तो अब सोनाक्षी भी चल रही है इन्हीं के नक्शे कदम पर। मीडिया से लेती है पंगा for Salman. She takes up for this macho man everywhere she can. अब nothing wrong in that. हम कुछ भी और suggest नहीं कर रहे हैं यहाँ other than a mentor-protege relationship. And Sonakshi is not the only one who's indulging in this hero worship relationship. Bollywood में अक्सर होता है कि actresses get obsessed with men double their age. Priyanka Chopra जब मिली अक्षय कुमार को, she had no idea she would ever fall for him. After all, उनमें भी था 15 साल का लंबा age gap. पर एक साथ फिल्म्स करते करते प्रियंका को आ गया पसंद अक्की का अंदाज और उन्हें एज डिफरेंस से नहीं रहा एतराज। अगर था तो वो था ट्विंकल खन्ना को एंड द प्रियंका अक्की दोस्ती वेंट फॉर अ कंप्लीट टॉस। डिम्पल कपाड़िया अपने काका यानी कि राजेश खन्ना के लिए हुई थी दीवानी और दोनों में था एन एज डिफरेंस ऑफ 15 इयर्स। लेकिन इसके बाद भी डिम्पल को पसंद आए काका और कर ली शादी इन 1973। अब वो बात अलग है कि दोनों की शादी कुछ ज्यादा दिन नहीं टिक पाई और डिम्पल और राजेश खन्ना हो गए अलग। राजेश खन्ना and Dimple Kapadia separated without completing the divorce proceedings. Following a few years of separation, later the distance brought about mutual understanding between Rajesh Khanna and Dimple Kapadia. The bitterness between Rajesh and Dimple washed away, and now they're seen together at parties, and Dimple even campaigned for Khanna's election and also worked in his film. Moving back to the past, the first name that comes to mind is that of Dilip Kumar and Saira Bano. Saira Bano का दिल जब दिलीप कुमार पर आया, तब सायरा और दिलीप कुमार का भी 22 years age difference था। दिलीप कुमार जरूर थे apprehensive अपने रिलेशन और एज डिफरेंस को लेकर, लेकिन सायरा थी डूबी हुई दिलीप कुमार के प्यार में, and they both got married in 1966. वैसे कई प्रॉब्लम्स आई दिलीप कुमार और सायरा की मैरिड लाइफ में, लेकिन सायरा ने नहीं छोड़ा साथ दिलीप कुमार का। So far, this marriage has set example of a successful marriage in Bollywood. Roshni Dubey, Page 3, Zoom, Mumbai. Younger girls, older men. कैसे हो जाते हैं obsessed? How, where and when? Well, it's time to start our party shati and get all our answers and relive some brilliant parties. With who else but Page 3 and Bollywood expert, Simi Chandok. Welcome to the show, Simi. Thanks for having me. पहला क्वेश्चन मेरा जो कंफ्यूजन है थोड़ी कि बचपन और 55 की जो हिट स्टोरीज और जोड़ी चल रही हैं ऑन स्क्रीन एंड देन ऑफ स्क्रीन, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम एंड वेयर इज इट गोइंग? I think, Supreet, it probably comes from the fact that, you know, if a hit pair work, if you take Priyanka Chopra and you take Akshay Kumar as an example, Priyanka Chopra had the same assets, she had everything going in spite of that, unka jo star status tha, wo wahi ka wahi tha, and she was not being able to get to that kind of level that she was aspiring for. And then suddenly she started doing movies with Akshay Kumar and एक के बाद hit. तो, you know, एक magic जैसा हो जाता है कि चलो ये जोड़ी चल रही है and I'm comfortable with him and it's working. एंड एक प्रॉक्सिमिटी फैक्टर, एक कंफर्ट फैक्टर वहाँ पर भी आता है, बिकॉज अगर एक हीरो हीरोइन यू नो 2 साल में 6-7 पिक्चर्स कर रहे हैं तो दे प्रैक्टिकली स्पेंडिंग मोर टाइम विद देमसेल्व्स देन एनीबडी फ्रॉम देयर फैमिली, सो इट्स नेचुरल टू गेट क्लोज. एंड सेकेंडली आई थिंक मुझे हीरोइन को लगता होगा इनसिक्योरिटी है कि अगर मैं किसी और हीरो के साथ ट्राई करती हूँ, उतनी देर में यहाँ पे कोई और यंग लड़की आ गई एंड शी टेक्स माई प्लेस, तो कल ये ना हो कि एक राइवल पेयर मेरे लिए बन जाए एंड बाई डिफॉल्ट when she leaves her so-called hit hero who's probably 20 years older than her or 15 years older than her, you know, he might end up with a younger girl who may, you know, pose to be a potential threat and a rival for her. But I'm sure कहीं ना कहीं एक true love scenario भी होता होगा ना? True love होता है. If you look at Saira Bano and Dilip Kumar, of course, you know, I mean, Dilip Kumar even got married to this other lady apparently, some lady called Azma, right? Saira Bano was so patient and she was really gorgeous looking, you know, he was much older than her, and if it was only about stardom, she could have left him then because he was no longer a star. She was not looking for a career or anything. She was really looking to settle down and she took that other lady and waited for the divorce to happen, made the marriage work again, and she's still with him, taking wonderful care
care of him. So that is what I call true love. And once in a while it happens where they really, really fall in love with the older man. So you think hero worship is here to stay in Bollywood? Yes, Sonakshi is absolute hero worship. I mean, you go for any press conference, any media, whatever, you know, कोई पत्थर सलमान पे मारता और जवाब सोनाक्षी देती हैं. You know, she's totally like anything and everything is like Salman, 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 and it's natural. I mean, he's including charity. Yes, including charity and everything. It's natural. He's given her one of the most amazing hits, you know, that anybody can think of or dream of. But I think she's kind of getting carried away with the whole thing, but that's her problem and she probably knows what she's doing. Okay, so it's clear, sometimes it's love, sometimes it's career, but is there another factor? And of course, the Godfather factor, but yes, there is another very, very big factor that probably plays a role here. यहाँ पे जो films की एक बहुत गंदी सच्चाई है, वो है casting couch. And it's not easy for any heroine to make it unless she's sleeping around with like a whole bunch of people. We all know that, they can all deny it, but that's the truth. It's not easy. सच्चाई यही है कि यहाँ पे ये जो हमारे हवस के पुजारी हैं, ये इन औरतों को नहीं छोड़ते हैं. तो I think it's probably easier and better to be with one man. He's older, he's more established, वो बड़ा स्टार है, वो तुम्हें recommend कर सकता है, उसमें उतनी power है, वो तुम्हें protect कर सकता है. 100 दरवाजे खटकाने से तो अच्छा है कि एक ही पास बैठे रहो and he'll be your watch guard.